Hello students, welcome to another class of your NASM. Today we will discuss about the last problem. Last problem रे हमरो दिया हितला y is equal to sin of x. Okay, then find the value of sin 32. Find sin 32 degree from the table. Okay, so table टा दिया हितला मु सीधा xy 30 degree 35 40 45 50 and 55. Okay, 0.5 0.5736 0.6428 0.7071 7660 and 8192. Okay, so this is the question. हमारे इठी हमें as usual normal procedure कर दबा x0 x1 x2 x3 x4 x5, then y0 y1 y2 y3 y4 and y5. Okay, h is equal to 35 degree minus 30 degree is equal to 5 degree. Okay, जेतु एटे 32 डिग्री पचारिछि x is equal to हमरो 30 डिग्री तो हमरो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन यूज हबो सेति पे s रो मूल्यटा हमरो एटी x minus x0 divided by h रे 30 minus 32 degree minus 30 degree divided by 5 which is equal to 0.4 ହେଲା 0.4 हमरो तारो वैल्यू टा हबो. Okay, clear? Now the table, difference table. Thirty, 35, 40, 45, 50, 55. Okay, 0.500 0, 0.5 736 0.6428 0.7071 0.766 0.8192. बर्तन हमें टेबल बाहर करिया तो फर्स्ट है हमरो 0.736 0.692 0.643 0.589 0.532. Okay, next हमारे स्ला माइनस हबो minus 0.0044 minus 0.49 minus 0.00
54 minus 0.57. Okay, it's minus 0.0005 minus 0.0005 minus 0.0003 आउ नबा दरकार नहीं कहीं एटा 0 हो जिवो ए वैल्यूटा रहले भी हमरो किछि आउ आवश्यकता नाही. ओके, एटा हमरो बर्तन हमें by using Newton's forward difference interpolating formula we have okay, so f of 32 degree, that is sin 32 degree. गोटे जिस ध्यान दियो जो आंसर आसूची आम निजे निजे भी आमर आंसर टा भूल की ठीक जानी दे परिया. देखो आमर 32 डिग्री कहले 30 और 35 भीतर रहइबो. एटा 0.50 अछि, एटा 0.57 अछि, तो 30 रो नियर अछि. सो इट विल बी इन बिटवीन 50 टू 57 हबो. इट विल बी मोर माने 53 52 ए पाखा पाखी हबो. आमे निजे निजे भी आईडिया करिया. बे बर्तन हम वैल्यू पकेबा. देखो इज इक्वल टू y0 टा हमरो 0.5 तापरे एटा s into 0.4 into 0.0736 0.4 into 0.4 minus 1 by 2 into ये वैल्यू टा minus 0.0044 plus 0.4 0.4 minus 1 0.4 minus 2 divided by 6 into a value minus 0.005. Therefore, sin 32 degree is equal to 0.5. Theta 4 into एति की गुणी ले पाइबा 0.00053. Point 2944. एटा माइनस माइनस प्लस है जीवो. So it will be 0.053 minus 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 of it will be 0.03. पांचटा डेसिमल हमें नवा दरकार नहीं, ओनली तीनटा डेसिमल नवा. चारिटा नवा हमर क्वेश्चन दे चारटा दे दिला. therefore sin 32 is equal to 0.529 4 होची. सो जदि आपको मु चारटा डेसिमल करबी 0.5299. ओके, दिस इज द वैल्यू. देखो आंसर टा हमर 0. आरो एटा को हमें 0.53 भी लिखि परिबा, किछि प्रॉब्लम नै हैला. किछि पिलारो 0.53 हमर 1 एमटी आसीची. सो इट इज ऑलमोस्ट करेक्ट. किछि दरकार नै, टेंशन नबानी. हम इटे डेसिमल परे 5299 कहले 0.53 भी हेई परिबो. ओके, क्लियर बुझा पड़िला. अच्छा, बर्तमान हमें एमती एक गोटे अलग टाइप रो प्रॉब्लम टा मु देबी. ओके, देखो
ओके एटी देख मोटा होमवर्क दे दूची तुम माने होमवर्क करो ओके तो एफ ऑफ टिके अलगा सहजटा अछि बट क्वेश्चन टा जेतु टिके अलगा टाइप रो लिखा आइछि सेति पे मु एटा दोछि समटाइम्स इट मे बी क्वेश्चन एभଳି आसी पारे values of y are values of y are 7 21 43 73 7 21 43 and 73 respectively. When the values of x are 2 4 6 8 8 find by suitable method of interpolation the value of y when x is equal to 7. Okay, this is the question. ଟିକେ ଅଲଗା ଟାଇପ ର ଅଛି ଏଇଟା ତମକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ଦେଇଛି ରେ ହୋମୱାର୍କ ଟା ଭଲ ଭାବେ ଦେଖ ओके क्लियर बर्तमान हमरो एटा derivation of backward difference interpolation formula देखिबा ओके इथि हमरो एटा लास्ट derivation टा ओके बर्तमान एथि देखि दवा जेंति फॉरवर्ड टा आइतला सेंति बैकवर्ड भी हबो एटा को नोट रे हमें लिखि दबा ओके derivation of backward Newton's backward interpolating formula okay Newton's forward difference formula cannot be used for interpolating function near the end of the table. Now we derive a formula for the near the end. I am already problem करि सारलेनी सेति पे हमको इजी लागिबो ओके सो we will derive a formula
when the values are nearer to the end. Okay, now let a set of values yi is equal to f of xi, where I is equal to 0, 1, 2, dot dot dot. Okay, now for equally spaced arguments, one thing you should remember, both in case of forward and backward हमरो equally space हवा ପାଇଁ बाध्य, नले हमरो जो वैल्यू टा माने इंटरपोलेशन टा लाग्रांजेस किंबा डिवाइडेड डिफरेंस पड़िबो, सेठी ए वैल्यू टा पड़िबो नाही. ओके, so equally spaced arguments. Now this is your, let xi is equal to x0 plus ih. एटा को इक्वेशन 1 नियो, एटा को इक्वेशन 2 नियो. Let us construct an interpolation function in the following form. Okay, now this is, let it be phi of x is equal to, जेमती हमें फॉरवर्ड रे करथिले सेमती एटे बैकवर्ड रे भी करिवा, a0 plus a1 xn minus 1 xn. Okay, now sorry, a0 plus a1 x minus xn plus a2 x minus xn x minus xn minus 1 dot 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 plus an into x minus xn x minus n minus 1 dot 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 x minus xi. Okay, so this may be the third equation. Now हमें वर्तमान एबे डिराइव करिवा to determine the coefficients. मैं लिखि दोची वर्तमान. Now our aim to determine AI. Okay, so that phi of xi is equal to yi, where I is equal to 0, 1, 2 dot dot dot. Okay, let it be this equation 4. Okay, so now using equation 4 we will have from equation 3 yn is equal to a0, yn minus 1 is equal to a0 plus a1 xn minus xn, that is equal to yn plus ai minus h. h is the interval, h टा हमरो interval टा हैला. Similarly yn minus 1 होला, similarly yn minus 2 एटा को दियो 5 6, yn minus 2 is equal to a0 a1 xn minus 2 xn plus a2 xn minus 2 minus xn minus 2
minus xn minus 1. Okay, so which is equal to yn plus yn minus 1 एटा को सिंपलीफाई कले एति के आसुची रे. ओके, so h minus 2h plus a2 into minus 2h minus h. अच्छा, एठी जो इक्वेशन 6 लिखली एठी a1 is equal to हमें एथरू एटा माइनस कर देले a1 is equal to हमर आसीबो a1 is equal to yn minus 1 by h which is equal to हमरो a वैल्यू टा. ओके, तो एटा को दियो 1 नंबर. तो a2 भी सेमती a2 is equal to yn minus 2yn minus 1. ये सब सिंप्लिफिकेशन है जी, खाली हमें मने रखी दवा by h square. This is your equation 8. एमती हमें सबु जाक कोएफिशिएंट बाहर करबा a2 a3 हैला. सिमिलरली बाकी सब सिमिलर लिखि दवा. Similarly, we have a3 is equal to by 3 factorial h cube, a4 is equal to dot dot dot. Okay, substituting these values n पर्यंत सेमती चली बोले है ना. an लिखि देबे कि an is equal to h root over n, n factorial. Okay, so substituting these values is सब equation रो values of ai in equation 3. We have phi of x is equal to yn plus by h x minus xn plus x minus xn minus dot 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 હું એકદમ લાસ્ટ ડાઉથી લખી દઉં છું x minus xn minus xn minus 1 dot 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 x minus xi. Okay, so this is the formula known as Newton backward formula. तो ये आमर जो आसिला this is backward formula. बर्तमान एटा को मुझे सजाई देवी s रे बाहर कर देवी s जेटे जेमती बाहर करा आइतला देखो. now let we know that x minus xn sh. Okay, so x is equal to हमारो xn plus sh. therefore सीधा h is equal to x minus xn by
h ओके एटा हमरा आसी गला नाउ x माइनस xn माइनस 1 जो वैल्यू जाको हमरो आसीबो ओके सेठी x minus 1 is equal to x minus xn plus h is equal to हमरो s plus 1 into h सेमती x minus xn minus 2 is equal to xn plus 2h which is equal to s plus 2 into h okay like this हमें एमती करी देले ए इक्वेशन टाको हमें ए ओडिया सजै दै परिया so using these notation we have जो फाइनल इक्वेशन ता हमर आसीबो सेटा को नै करी हमें पकई दबा I of x is equal to हमें yn हैला तापरे x minus x ah को ah कटि जीवो sh एटे xh is equal to x minus xn हबो तो x minus xn जगह रे sh पडिले h को h कटि जीवो रहइबो कोन डेल्टा yn into s तापरे हमरो s into s plus 1 by 2 factorial h square कटि जीवो देखो इठी अछि रहइबो हमरो कोन डेल्टा स्क्वायर yn s into s plus 2 s plus 1 s plus 2 by 3 factorial so this is the required हमरो backward interpolating formula हैला तो एति के हमको लिखिया को पड़िबो ओके तो ताल देखरी हमरो 10 मार्क्स रो गोटे क्वेश्चन हमको मिलिबो क्लियर एटा हमरो रिक्वायर्ड एटा हमरो बैकवर्ड फार्मूला एटा फाइनल एटा को हमें ताको सिंपलीफाई करी करी एति के हमें आंसर लिखि दे ओके तो सेति पई हमें एठी भली भाबे केयरफुली देखिबा एटा को नोट रे लिखि दबा लिखि की हमें प्रैक्टिस करबा काहे कि एग्जाम रे हमको लिखिया पड़िबो एटा पूरा डेरिवेशन जेतले कहबो ओके क्लियर मु आज मझिरे देइछि गोटे क्वेश्चन टा टिके अलगा टाइप रो सहजटा तमे ताको जो मेथड चाहिबो से मेथड रे करि परिबो तो फॉरवर्ड रे करो बैकवर्ड सॉरी 7 देइछि ना बैकवर्ड रे हबो कि फॉरवर्ड रे हबो कि लैंग्वेजेस करिवो कि डिवाइडेड डिफरेंस करिवो सेटा तम ऊपर निर्भर तो इथि तमरो इंटरपोलेशन रो सल्ला काम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल गो फॉर न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन होला तो सेटा हमरो अलगा टॉपिक हबो ए यूनिट रो ही सेटा अछि माने 10 मार्क एथरु पडिबो 10 मार्क सेथरु पडिबो हमें एबे 10 सेकंड यूनिट रो 10 मार्क सरला सेटा 8 वरी सहज अछि सेटा माने दुईटा मेथड ही अछि तार तो हमको सहज लागिबो सेतमे एटा भलो भाबे प्रैक्टिस करबा आ सहित से आसीबो ए बी और सी डी सो दैट हमको सहज हबो हमें भल की प्रैक्टिस करि परिबा ओके तो थैंक यू हैव ए नाइस डे।